वेलकम टू रेडियो जिंदगी। एक बार फिर से मैं आ गया हूं आपके सामने लेकर एक और शख्सियत को। जी हाँ, इस बार एक जिस शख्सियत को लेकर आया हूं, एक बहुत ही मुकम्मल आर्टिस्ट है, बहुत ही मुकम्मल एक्टर हैं। आप अपने फ्रेम पे देख भी रहे हैं। मेरे साथ है मोहित रैना। वेलकम टू रेडियो जिंदगी मोहित। Thank you so much. Thank you so much for having me. मोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि यू आर ऑन रेडियो जिंदगी, विच इज अमेरिकाज नंबर वन साउथ एशियन रेडियो नेटवर्क। सो यू आर राइट नाउ बीइंग हर्ड इन यूएसए। Oh, that's fantastic. That's fantastic. So just you can see All what my fan love following to you have. all the viewers. Yeah, so you can see what fan following you have here also. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So Mohit, we are here for Mumbai Diaries. First of all, तो ये नाम ही बहुत appealing है, Mumbai Diaries. And I was talking to Nikhil also, and he explained why it is. Before we come actually to the this series, I just wanted to know कि आपका personal क्या रहा है उस वक्त जब ये हुआ था हादसा। आपका कोई पर्सनल उस वक्त रहा है, कोई एक्सपीरियंस रहा है उस वक्त का आपका? Like मेरा personally इस event से connection तो नहीं रहा because I was fortunate enough that we were all safe. So ऐसा कुछ हुआ नहीं था. हाँ, मैं उस समय मुंबई में था, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ था and I was traveling from the exterior part of Mumbai. From a place called Vashi, we were entering into the city limits when we were stopped by the authorities who were trying to figure out at that point of time what exactly has happened in the city. So then I waited at my friend's place for a few days, and we were all glued to the TV screens and the news channels, trying to understand exactly what had happened. Because there was initially there was lack of information, but slowly, as the day passed by, as the time passed by, we came to know what exactly had happened in the city. So yeah, it was quite, I would say, emotional, and it was very. It touched a lot of chords for me personally because I, coming from Kashmir, I always used to think that I've been there and I've seen it all, and I have seen it from a very young age, early age, when I was from being a child. So when I came into the city of dreams, Mumbai, and seeing the same thing happening in Mumbai, absolutely, thinking that you won't ever see and see it again. You won't see the kind of destruction and the events that took place. I had thought that I've seen it all. Seeing that happening in the city of dreams, in the city of Mumbai, the financial hub of the country, being halted for 3 days. Personally, it was very, very, very shocking for me. It was very. I was quite taken aback. Yes, I still remember after when I was going back home, there was a silence in the city. I've never seen a silence like that in Mumbai. I guess Mumbai that is silence always, is still with us. In that imprint is still with us, all of us, and that is when Mumbai Diary is now there, and it is a very, very different take from the writer and director on that 26/11 event. आपका रोल एक डॉक्टर का है, डॉन मुथुस्वामी से एक डॉक्टर का रोल। ये ट्रांजिशन, ये रिसर्च, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मुंबई डायरीज के बारे में बताइए मुझे। जी, बहुत अच्छा सफर था। बहुत अच्छा सफर था। जब आप किसी भी एक नए प्रोफेशन में जाते हैं या आप अपना करियर चूज करते हैं, सो आपको गलतियां ज्यादा सिखाती हैं। आपको अच्छी चीजें या सक्सेसफुल या सफलता से आपको ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है जितना आपको अपने फेलियर्स से, अपनी गलतियों से सीखने का मिलता है। एंड व्हेन आई से फेलियर्स एंड गलतियां, आई डोंट मीन दोज वर बैड प्रोजेक्ट्स, एंड you come to know slowly, and you have a realization that what exactly do you want to do, what do you want to be a part of, and what is your motto in life. I remember मेरी शुरुआत मैंने ग्रासिम मिस्टर इंडिया का एक मॉडल बन के की थी, because उन दिनों there were never that many opportunities for people like me from small towns to come. उन दिनों आई थिंक एक ग्लैड्रैक्स होता था और एक ग्रासिम होता था। तो आई थिंक मैं ग्रासिम के थ्रू आया था, एंड उन दिनों जब हम आए थे उसके बाद मुझे रैम्प शोज करने का बहुत मौका मिला था। सो मैं जब रैम्प पे चलता था, आई ऑलवेज न्यू दैट दिस इज नॉट वेयर आई बिलोंग, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। आई वाज डूइंग दैट एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दोस शोज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, just to make sure that I make the ends meet, because it was very difficult to survive in a city like Mumbai, because Mumbai is very expensive.
So, but I always knew it that this is not what I want to do, because at that point of time I realized I am someone who likes to express. Yeah. And that's how acting happened to me. तब मुझे लगा कि अच्छा मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ इमोशंस को. आई थिंक कहीं वो मुझे प्रोसेस बहुत अच्छा लगता. तब जाके मैंने एक्टिंग की तरफ अपना रुझान डाला. तो बात आपने डॉन मुत्तु स्वामी की है, तो उस समय मैंने अंतरिक्ष शो किया था. राइट. और उसी समय जो बहुत बड़े उस समय प्रोड्यूसर थे, अभी वो हमारे बीच में नहीं है, शक्ति सामंता. शक्ति सामंता एक इंटरनेशनल फिल्म थी ऑस्कर, सिल्वेस्टर स्टैलोन की. उसका रीमेक बना रहे थे, हिंदी वर्जन बना रहे थे, विच वाज कॉल्ड डॉन मुत्तु स्वामी, जिसमें मिथुन दाते और ऋषिता भट्ट थी. और मुझे उसमें काम करने का उन्होंने मौका दिया, बिकॉज मैंने उनके साथ अंतरिक्ष भी किया था. तो वहां से जर्नी मैंने शुरू की थी. उसके बाद धीरे 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 आप इवॉल्व होते गए. आपने कॉमेडी किया, उसके बाद आप रिलीजियस चीज में चले गए, आपने सोशल ड्रामास किए, उसके बाद आपने डिफेंस बेस्ड स्टोरीज की, उसके बाद आपने जर्नलिस्ट भी प्ले किया काफिर में. देन आई प्लेड अ कॉप. देन उसके बाद मुंबई डायरीज हैपेंड टू बी. सो मुंबई डायरीज हैपेंड व्हेन मिस्टर निखिल अडवाणी अप्रोच्ड मी. ही सेड कि मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं एंड आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट. राइट. एंड आई वाज थ्रिल्ड, आई वाज हैप्पी. अच्छा सर, और क्या चाहिए मेरे को? एक रियल इवेंट बेस्ड कहानी है जिसे आप कहने के मास्टर हैं, बिकॉज ही इज अ मास्टर इन दैट. सो उन्होंने टाइम एंड अगेन, हम सब जानते हैं उन्होंने कैसे कैसे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स को बनाया है. सो वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर प्ले करूं. एंड देन डॉक्टर इज समथिंग दैट आई हैव नेवर प्लेड. यू नो, बचपन से मैं माय फादर वाज अ डॉक्टर. तो मैं उनकी बीपी की जो मैनुअल मशीन होती थी उसके साथ में खेलता रहता था. बट कमिंग हियर एंड मेकिंग दैट ड्रीम कम ट्रू एंड ट्राइंग टू प्ले अ डॉक्टर. So I think it was a great experience doing the workshop, working with actors like Pankaj Singh Sharma, 2 times national award winner, you know. Wonderful actor. So उनके साथ काम करने का मौका मिला. बाकी जो कास्ट है, क्रू है, राइटर्स, you know, हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, then Amazon Original backing the project. So I think it was a win-win situation for me. Like literally, I was just telling someone कि मैं literally, when the phone rang and it said Nikhil Advani calling, I waited for 2 minutes. I said, okay, he is calling me. Okay, 1, 2, 3. No, he is calling me. And then I picked the phone. It wasn't like अच्छा मैंने phone उठा लिया और कि वो मुझे दोस्त थे या मुझे जानते थे. So it was a maker who was calling me, approaching an actor. So I was very happy. Great. So something about Dr. Oberoi. So what character, the character which you are playing, वो अंदर से कहाँ से वो डॉक्टर निकल के आया, डीलिंग एट दैट मोमेंट जब ये सब हो रहा है, बिकॉज ये बिल्कुल डिफरेंट एंगल है, इस पूरे पर्सपेक्टिव का बिल्कुल डिफरेंट एंगल है. तो इसमें उस डॉक्टर का रोल, बाकी जो वहां के स्टाफ है उनको बूस्ट करना, वो जो सारी चीजें हैं, वी हैव सीन द टीजर्स, इट इज वेरी इंप्रेसिव. आप बहुत कमाल के उसमें लग रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं. सो जस्ट टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट डॉक्टर ओबेरॉय एंड मुंबई डायरीज इन पर्टिकुलर, कि उसमें क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ व्यूअर. थैंक यू. आई थिंक पहले मैं आपको थोड़ा सा मुंबई डायरीज के बारे में बता देता हूँ कि जो मुंबई डायरीज की जो कहानी है, उन्होंने 26/11 का इवेंट जो है उसको बैकड्रॉप में लिया है. एंड नाउ मिस्टर अडवाणी डिसाइडेड कि हिंदुस्तान में हमने कभी मेडिकल ड्रामा नहीं बनाया. सो दैट्स हाउ ही एंड अमेजॉन डिसाइडेड दैट कि हम लोग मिलकर एक मेडिकल ड्रामा बनाते हैं जो डॉक्टर्स की जिंदगी पे फोकस करेगा. राइट. यू नो, आपने इस जो ये इवेंट है इसको आपने बहुत डिफरेंट वर्जन देखे हैं, डिफरेंट एंगल्स देखे हैं इस इवेंट के, बट आपने कभी इसे डॉक्टर की नजरिए से नहीं देखा. यू नो, आपने ये नहीं देखा कि एक सरकारी हॉस्पिटल की हालत क्या होती है. अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो भी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो हम सब ने फेस किया. हम सब ने अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक के दौरान देखा कि अगर ऐसी कोई त्राही आती है, you know, there's some kind of emergency and this happens, so what can happen, what can go wrong. So आप सोचिए उस समय 2008 में क्या हुआ होगा जब एक अस्पताल में एक डॉक्टर्स जो है, फॉर एग्जांपल, they are only capable of handling X amount of patients and they only have limited amount of blood group and supply in the blood bank, and then suddenly there are hundreds of patients barging in, and you only have 2 or 3 operation theaters and you only have couple of ICU beds because maybe you have limited staff, you have limited medication, you know, and आप बाहर से मंगा नहीं सकते because city is under siege. What happens, you know, at that point of time, वो डॉक्टर क्या डिसीजन लेता है, उसकी नर्स क्या डिसीजन लेते हैं, उसके स्टाफ क्या डिसीजन लेता है, उसके जो वहाँ का जो चौकीदार है जिसकी 8 बजे फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी खत्म होने वाली है,
एंड वो क्या डिसीजन लेता है, 2 बजे किसी का बच्चा स्कूल से घर आने वाला है, बट ही हैज टू operate there, and you know what are the circumstances. So what exactly is happening in the minds of those doctors in the medical fraternity, and against all odds they have to stand and deliver it to the people. जो उस पेशेंट के, जो उस ऑपरेशन थिएटर के बेड पे बैठे हुए अपनी अनखुली आधी खुली आंखों से आपको देख रहे हैं, ये समझकर कि हाँ ये सफेद कोट में कभी भगवान आए हैं जो हमको बचाएंगे, you know, they don't know what you're dealing with. Yes. But उनका moral boost करने के लिए you have to make sure that you giving your best, and you make sure that you make them believe that they are going to be okay, you know. So जो medical oath होती है, irrespective of the circumstances, irrespective of what is happening around, I have to be true to my oath, and I have to go to any extent to save the patient with those blinders, with those blinkers on. You know, that is Mumbai Diaries for you. Human approach. This Dr. Kaushik Oberoi, he's a well-read doctor. He had the opportunity to go and study, work abroad. He had the opportunity of serving in the best of the institutes. You know, he could have been in the best of the private institutes, but he chose to serve the people who are deprived, who are the weakest section of the society. Absolutely. He chose that I know a certain kind of a job, and I don't want to make it a business. I don't want to earn an X amount of money in a private institute. I rather use this knowledge, use this to serve my people and save my people. Absolutely. So it's a very human approach. So I think people will really connect with it. And we have seen it in pandemic times also. The frontliners, the medical fraternity has come up, and same thing has been, depicted in a different manner in this series, Mumbai Diaries. A wonderful job done, Mohit, and teasers are definitely promising, and we are looking forward. तो जो आपने बताया अभी डॉक्टर साहब के बारे में, डॉक्टर ओबराय के बारे में, और जो फ्रंटलाइनर्स हमने पैंडेमिक में भी देखा अभी कि किस तरह से जो है पैंडेमिक के दौरान जो फ्रंटलाइनर्स हैं हमारे, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, दैट केम अप, एंड दे ऑलवेज कम अप एंड स्टैंड विद द कम्युनिटी. वो एक डिफरेंट एंगल से इसमें भी दिखाया गया. तो बस अब क्योंकि मुझे इशारा मिल रहा है कि भाई अब वाइंड अप करना है, मोहित को ज्यादा परेशान ना किया जाए, तो बस मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो सीरीज है ये हम कहाँ देख सकते हैं, कब रिलीज हो रही है, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को. एक बार प्लीज आप बता दें रेडियो जिंदगी के फैंस को. मैं सभी रेडियो जिंदगी वालों से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज, दिस इज नॉट अ एक्टर प्रोमोटिंग अ शो. This is a human being requesting you to watch a story which is based on a human approach of the medical fraternity. We all know कि यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या सहा, वही सब हमने हिंदुस्तान में भी सहा, ग्लोबली सब ने सहा. लेकिन उस कंडीशन में ये जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स थे वो कैसे खड़े हुए, कितने दिनों तक वो अपने घर में नहीं गए. सो आई वुड से कि ये खुद भगवान की चाह थी कि ये एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन, मैं कहूंगा एक डेडिकेशन है उनके लिए, जिसका मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला. सो आई वुड ओनली रिक्वेस्ट देम टू प्लीज वॉच इट. इट इज मेड विद लॉट ऑफ ऑनेस्टी, गुड इंटेंशन, एंड नेवर टोल्ड स्टोरी with the emotional chord that will touch you, that will make you think, and that will make you respect the frontline workers more. So please watch it on Amazon Prime Video on September 9th, and give it all your love. And yes, just keep watching and sharing our love, your love on us, and we will keep entertaining you. Very nicely put, Mohit. जैसा आपने कहा कि it's not an actor promoting, the series or upcoming web series, and you should go by heart. You should think from here and watch this series. Then you will relate to it. Thank you so much, Mohit, for joining Radio Zindagi. And जैसा कि इसकी tagline भी है आपकी कि I was there, right? I think that is what it is. Yes, very true, very true, very true. So there's a time when we all are somewhere. We should do such things as the frontliners do. हमें कहीं भी मौका मिले किसी की हेल्प करने का तो हमें करना चाहिए. So thank you so much, Mohit, for joining us at Radio Zindagi. Thank you so much. And thank you so much. Stay safe. Stay safe. Thank you. Thank you. Thank you.